नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आफ्टर जय बांग्ला स्लोगन एंड द हाथेखड़ी ड्रामा वेस्ट बंगाल गवर्नर समन टू दिल्ली बाय अमित शाह। क्योंकि कल हमारा सरस्वती पूजा था और हमने देखा और सरस्वती पूजा के दिन शाम को राजभवन में हमारे यहाँ गवर्नर पैलेस में ममता बनर्जी ने हमारे जो गवर्नर है सीवी आनंद बोस जी को सरस्वती पूजा के लिए हाथेखड़ी एक प्रोग्राम कराया। हाथेखड़ी प्रोग्राम हम एक्चुअली बोलते हैं छोटे बच्चे के वहां सरस्वती के सामने कराया जाता है। हाथेखड़ी में लिखा ना शुरू करता है जिसका मतलब वो इस दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इस वजह से उस प्रोग्राम तो हुई और वो प्रोग्राम वायरल हो गया। उसके बाद ममता बनर्जी की किसी की लिखी स्पीच में देख देख कर हमारा जो गवर्नर साहब है उस बंगाली में स्पीच पढ़ने लगे। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें खबर आई कि न्यूज में देखा कि सेंट्रल से गवर्नर जी को दिल्ली बुलाया गया है। उसके बाद क्या हो रहा है अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अभी सब गुपचुप हो रहा है। अमित जी क्या बोलेंगे आप इस बारे में? अमित जी तो बीजेपी से है। ये दोस्ती के गवर्नर है, इसमें कितने हैं चलेगी? मैं आपके चैनल पे एज अ बीजेपी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी संस्था अटल संकल्प को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसी तर्ज पे अपनी बातों को रखूंगा। और देखिए, पाला बदल दिया क्या आपने अमित जी? नहीं, पाला बदलने की कोई बात नहीं थी। वसुधा जी ने कहा था कि अपने इस पे जो संस्था है उससे आइए, तो उससे जुड़े हैं। और जब वो बुलाएंगे बीजेपी की तरफ से तो तब आकर वो पक्ष भी रखा जाएगा। पर बहरहाल जो आज का विषय है, अगर आज इतनी प्रॉब्लम है बंगाल में, इतने डरे हुए हैं बीजेपी वाले कि वो बीजेपी के नाम से बैठते नहीं है, ताकि उनका कमेंट जो है वो बीजेपी के तरफ से ना लिया जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा तो उनकी लिंचिंग हो जाएगी। और इसका पहले शिकार आपके, मुझे लगता है, इस स्क्रीन में अमित तिवारी है ही। देखिए श्रीकांत जी, वो आप अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और जाहिर सी बात है, हम लोकतंत्र में हैं और सभी को अपना अपने विचारों की अभिव्यक्ति है कहने की। अगर हम आज के मुद्दे पर आए, जो वसुधा जी ने जैसा कि बताया, जिस भी तरह से जो घटनाक्रम हुआ गवर्नर भवन में, और जिस तरीके से जो गवर्नर है बंगाल के, उन्होंने लगा कि जो भी एक देश के सामने जो चित्रण आया कि ममता बनर्जी के साथ हो लिए, तो देखिए, गवर्नर्स को नियुक्त ही किया जाता है ताकि वो एक समन्वय बैठाकर चल सके, राज्य और केंद्र के साथ एक समन्वय बैठा के चीजों को कर सके। तो अगर किसी एक कार्यक्रम मैं में आपको यह रोक रही हूँ, तो धनखड़ जी के साथ क्यों नहीं हुए? धनखड़ जी इतना पावरफुल क्यों थी? ये इतना मिनमिनाए हुए क्यों है? वो धनखड़ जी का अपना व्यक्तित्व है, वो उस तरीके से चीजों को कैसे डील करते हैं, वो उनका अपना व्यक्तित्व है। और जहां तक रही हमारे प्रेजेंट गवर्नर की बात, तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है, वो चीजों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। तो जो भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे उस चीज को मेरे ख्याल से मैंने उस चीज को देखा, बट हाँ, थोड़ा सा वो लगा कि शायद जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो हाईजैक हो चुका है। टीएमसी वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम टाइप लगने लगा था। बट मुझे लगता है कि इस चीज को उतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लड़ रही है टीएमसी के अत्याचार के खिलाफ, टीएमसी के करप्शन के खिलाफ, टीएमसी के जो भी हमारा पिछला कार्यक्रम जो हुआ था, जो डीए कर्मचारियों के साथ जिस तरीके से खड़ी है, और जिस तरीके से एसएससी का जो पूरा घोटाला हुआ वो निकल कर बाहर आया, पशु की स्मगलिंग के लिए जो पूरा निकल कर सामने आया, हमने नोटों के पहाड़ देखे किस तरीके से बंगाल में पाए गए, जो कि अकल्पनीय है। तो
मेरे ख्याल से बीजेपी इन सभी के खिलाफ लड़ रही है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि, पर एक लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगी। इसमें किसी भी जिस तरीके जो हथकंडे टीएमसी अपनाती है, ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी उन सब हथकंडों को नहीं अपनाने वाली, क्योंकि यहाँ पे भाजपा एक पार्टी विद अ डिफरेंस है और वो उस तरीके की राजनीति करते आई हैं। आपने देखा होगा गुजरात का जो इलेक्शन हुआ, कितनी भारी मात्रा में वहां पे जीत दर्ज हुई, लेकिन किसी भी विरोधी दल के किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हुई। भाजपा ने जश्न मनाया, सब अपने घर गए और सरकार बनी, बट किसी को भी इस तरीके से, जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेशन हमने बंगाल में देखा और महीनों तक वो चलता रहा, पोस्ट मतलब पिछले 1-2 सप्ताह तक तो जितना वो विशेष था वो तो हम कल्पना भी नहीं कर पाए, और जिस तरीके से नड्डा जी की गाड़ी पर ही और मिनिस्टर्स की गाड़ी पर ही पथराव, तो अभी भी चल रहे हैं। ऑपोजिशन के नौशाद सिद्दीकी को तो हमने देखा किस तरह से घसीट कर लेके गए, चाहे किसी भी पार्टी के हो। बिल्कुल, तो उन सभी के खिलाफ हमारी भाजपा की लड़ाई चल रही है और मेरे ख्याल से आगे भी जारी रहेगी। अनिमित्र दा, आप तो इधर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आप इधर हालत कैसे देख रहे हैं? ये जो गवर्नर के साथ इतनी दोस्ती ये वो दिखा रहे हैं, और हम देख रहे हैं आधे से ज्यादा स्कूल में सरस्वती पूजा बंद कर दी गए, क्योंकि उधर एक बहुत मेजॉरिटी का स्टूडेंट दूसरे कम्युनिटी से है, और आप इसके खिलाफ लड़ाई भी कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? खासकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में खुद टीएमसी पूजा करना चाहते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर पूजा नहीं करने दिए गए, क्योंकि कभी एक जमाने में प्रेसिडेंसी कॉलेज वाज फेमस, उसका असली नाम था हिंदू कॉलेज। Well, Basudha, thank you. I would like to talk in English since I have some problems in Hindi, but मैं हिंदी में बोलने की Okay, no problem. No problem. You can speak in English also. Thanks to all, जैसे कुमार जी है, श्रीकांत कुमार जी है, अमित तिवारी जी हैं, आप हैं। लेकिन as far as I am concerned, when I am seeing the political developments in Bengal, I must say that this move of Mamata Banerjee, the venerated CM of Bengal, is an unusual political game. It's an unusual political gambit. It's the first way to domesticate, to tame the government. Okay, you know that Bengal has a huge history of altercations between the government and the government. In the 1960s and the 70s, with that presence of Dharam Viraji, Santi Sarup Dhawan, there were lots of problems in Bengal. They even threatened those governments at the time by bringing out the military patrols from the fort areas to tame all those political disturbances. And we have also found that in the last tenure of left-wing government, there was a huge altercation between the left front and Gopal Krishna Gandhi. And nowadays, what the Justice Avijit Ganguly is also fighting a very desperate game. So for the very beginning, I must say the entire Hathekhari or asking the governor to learn Bengali and everything is nothing but a political gambit. It's to tame the governor from the very beginning. I do not know how far the Honorable Governor, His Excellency, knows of Bengal, but it must be stated at the very same time that for the last century or even more, Bengal has been dominated by two types of politics. One, the Bhadralok politics, the decent ones within the four walls of the assembly, and the hoodlum politics in the streets. And since Mamata Banerjee is a person from the Congress school of thought, she knows it very well from the beginning how to deal with the administration and how to tame the administration. And from 2011, we have found the same thing. There were lots of assurances that the atrocities and agonies within the left-front government shall end, but we have found in the last more than a decade, it has increased only. And all those persons who had been in CPIM at the time are now in the Trinamool Congress with their old expertise and experiences. So this is a very critical situation. I do not know what shall be the role of the governor in the later days. How would he react after coming back from Delhi, and what would be the benefits after calling him in Delhi or not? But I must say, as far as Bengal is concerned, Mamata Banerjee is in a win-win situation. Number one,
with this presidency college universities Saraswati ideal debate and everything, the Trinamool government, the Trinamool party has tried to win a considerable section of the Hindu vote bank. It's true. If we find the social media, especially the Twitter and the Facebook, it's true that people who are in still the Bharatiya Janata Party's fold, the person who are still in the Hindutva brigade, have started to praise this gesture of the Trinamool Congress that at last somebody is there who is fighting for the Hindu cause. Well, I do not know that whether there has been any deal behind the curtain regarding this presidency college brawl and everything, but there is something. There is some political. What I'm going to say. I'm not going to say political settlement, but there is some deal, I think. But whatever it is, at the end of the day, it must be stated that despite in many parts of state there had not been the Saraswati Puja, but as far as Calcutta and the suburbs are concerned, the Trinamool Congress has taken the baton among the Hindus. Now, what is the benefit? What is the plus point of Mamata Banerjee? Mamata Banerjee is the stormy petrol. She represents the mass movement, the furious mass movements, the valiant mass movements in the streets. She did in the 1990s, even in 2006, 7, 8, the Nondigram and Singhu, and now she is in administration. And from the very beginning, the Trinamool government has taken a policy that they are not going to allow a single disturbance on the streets. And we have seen that even that what is most remarkable to us, the state which is known for its mass movements, the far struggles in the streets, has not witnessed any such in the last more than 1 decade. This is one of this plus point. The second plus point is that I must say, if I do take all things into consideration and make an analogy, it must be found that despite having a prominence and a preeminence in the Indian parliamentary scenario, the central government led by the Bharatiya Janata Party or the Hindu brigade has not been able to adopt any drastic step in the case of Bengal. And this has heightened her self-confidence. Had it been the vindictive government of Mrs. Gandhi in the center, the situation would have been something different. But since we do not hope anymore that the central government is going to take any positive step in the case of Bengal, since in 2021's post-poll alliances, the way there had been rampant human rights violations, the way there had been umpteen rapes, murders, destruction of properties, of us and belonging to a very special party called the Bharatiya Janata Party and the scatters, and the way the state leadership dealt with it, reacted to it in a very timid manner. I do know some of the persons who would switch their phone off after 9 at the night so that they can be called. I don't want to name anybody in this session, but definitely there have been, and not only me, there are thousands of persons to give the same evidences that they have not got any help. The National Women's Commission's representative came to Bengal to take stock of the situation, but we do not know what has happened to those reports. What are those reports? We haven't seen that the government of India or the National Women's Commission have published any such reports. And if any such reports is published at any time, it shall be found the gross human rights violations that happened in 2021 are quite enough to warn the government that in any further reiteration of the same, the 356 can be imposed on grounds of extreme deterioration of law and order. It's number 2. And number three is that the sorry position of the opposition in the state. It's a very sorry position. Even in the 34-year regime of the left front government, many people should admit there was not a single day that passed without some protest in the streets. सर मैं आपसे थोड़ा रुक रही हूँ। श्रीकांत जी का कुछ बोलना है? श्रीकांत जी हमें छोड़कर चले जाएंगे। श्रीकांत जी आप क्या बोलना चाहते थे? एक्चुअली मैं 10 बजे से एक डिबेट में हूँ, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मैंने इसलिए आपको आधा घंटा दिया था कि शायद आधे घंटे की डिबेट में 2 टर्म आ जाएगा बोलने के लिए। बहरहाल खैर चलिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात बिल्कुल संक्षिप्त में रख रहा हूँ, शॉर्ट में। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है कोलकाता में और कोलकाता की जो राजनीति
चल रही है बंगाल की राजनीति, उसके लिए बीजेपी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। बीजेपी ने पहले धनखड़ को दिया और धनखड़ ने एक बेहतर राज्यपाल की भूमिका निभाई, और उस राज्यपाल की भूमिका के कारण हमने देखा कि ममता बनर्जी राजनीतिक चातुर्य के बावजूद भी, मतलब बेहतरी के बावजूद भी वो कमजोर पड़ी, और हमने एक बेहतर राज्यपाल को देखा बंगाल में। लेकिन जिस तरीके से ये नए राज्यपाल है, मुझे तो इनकी क्रेडिबिलिटी से प्लस मुझे इस बात पे भी शक होता है कि क्या ये राज्यपाल बनने लायक थे कि इनको राज्यपाल बना दिया गया। दूसरी चीज ये है कि राज्यपाल का काम राजनीति नहीं होता है, और वर्तमान के तमाम राज्यपाल राजनीति करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये राजनीति कर पा रहे हैं? ये राजनीति करने में भी मुझे लगता है कि ये फेल नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज है कि राज्यपाल बने रहने में और पश्चिमी बंगाल जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और इस देश में अगर आप देखा जाए तो कश्मीर शांत है, लेकिन पश्चिमी बंगाल अभी भी सुलग रहा है। राजनीतिक हत्याएं वहां हो रही हैं, वे अपने विरोधियों के दमन के कारण ममता बनर्जी अभी भी वहां पर काबिज है। तो आपको ये लगता है कि ये राज्यपाल जब से बने हैं तब से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इन्होंने ममता के खिलाफ कुछ बात भी कही है। और जैसा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इनको बंगाली नहीं आती है, या ये बांग्ला नहीं जानते हैं, या फिर ये ममता बनर्जी से को नहीं जानते हैं। जानते वक्त भी क्या मैं अमित तिवारी को कोई भाषण लिखकर दे दूंगा, अमित तिवारी पढ़ देंगे? इतने भोले तो ना अमित तिवारी हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल के गवर्नर को भी इतना भोला नहीं होना चाहिए। और जब मंच पर जहां आप सेंटर की का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सेंटर की एक पार्टी विपक्ष में जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त है, उसके विरोध में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, आप जय बांग्ला बोल देते हैं। जय बांग्ला में तो वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सोचिए आप लिखा हुआ भाषण पढ़ते हो, और इनएक्टिव नजर आते हैं मुझे पश्चिम बंगाल में वर्तमान के राज्यपाल। और वर्तमान के राज्यपाल अगर एक्टिव रहते तो शायद मुझे लगता है ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोगों को। अमित जी क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? वसुधा जी, देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये अपना एक आकलन है। सभी स्वतंत्र हैं उसके लिए, उस जैसा भी उन्होंने देखा उसका विवरण करने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको एक मेरे ख्याल से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बाकी जैसा आपने कहा, मुझे तो जानकारी नहीं है, पर जैसा आपने कहा कि उनको दिल्ली बुलाया गया है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कुछ मैं आपसे रुक रही हूँ, क्योंकि आपके लीडर स्वपन दासगुप्ता ने बोल दिया ये तो गवर्नर तो ममता बनर्जी के जेरॉक्स कॉपी होके काम कर रहे हैं। आप तो बंगाल से है, आपको तो ये जानकारी होना ही चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला है कि ये गवर्नर की तरह कम काम कर रहे हैं, और इसीलिए अमित शाह ने बुलाया अमित तिवारी जी। तो आप इसमें तो बोलिए ना कि आपने एक से पपेट क्यों दे दिया, आपने पश्चिम बंगाल में पपेट गवर्नर क्यों दे दिया? देखिए, पपेट और इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ हम बीजेपी का नहीं रहता है कि किसी को पपेट बना के भेजे, या किसी को। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो स्वतंत्र हैं अपने रूप से, अपने बुद्धि के हिसाब से काम करने के लिए। लेकिन जो भी ये घटना हुई है उसका संज्ञान पार्टी के उच्च अधिकारियों ने लिया है, और उसके ऊपर आगे बात भी हो रही है। तो जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, मुझे तो हालांकि उसकी जानकारी नहीं है कि इसका क्या क्या उसका कार्रवाई होगी या क्या नहीं होगी, बट जो भी इसका होगा हम सबके सामने होगा। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पे कोई भी बयान करने से पहले हमें देखना चाहिए कि पार्टी के आधिकारिक रूप से क्या इस पे टिप्पणी आती है, और अमित उसके जी, बाद मैं आपको सूचना दे देता हूं, क्योंकि मुझे एक न्यूज चैनल में 10 बजे से जुड़ना है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर हमें पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर मिलने जा रहा है। बहरहाल, ये सूचना मैं केवल आपको ही देना चाह रहा था, क्योंकि आप बंगाल में रहते हैं, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे कम पता होना चाहिए। लेकिन जो सूचना मुझे मिल रही है कि गवर्नर बदला जा रहा है, क्योंकि ये वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं जो फायदा 2024 में बीजेपी लेना चाहती है। बहरहाल, बहुत धन्यवाद अमित जी। जी, नमस्कार नमस्कार श्रीकांत जी।
इस जो भी श्रीकांत जी ने कहा उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो हम सबके सामने आएगा ही। और जैसा कि अभी अनिमित्रा दा ने कहा कि जिस हिसाब से बंगाल में एट्रोसिटीज होती हैं, जिस हिसाब से बंगाल में जितनी वायलेंस देखा है, ना कि टीएमसी, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द टर्म व्हिच टीएमसी इज सर्विंग, बट इसके पहले भी जितने सीपीएम का जितना भी कार्यकाल रहा, वो भी जितना वायलेंस उस कार्यकाल ने देखा है, तो एक लंबा इतिहास, एक लंबा दौर चला सीपीएम है। का कार्यकाल में वायलेंस था, इसलिए जी तो सीपीएम को बदला गया, इसलिए ही टीएमसी को लाया गया। जी 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 इस और लेकिन उसमें टीएमसी वो रेजिस्टेंस दे पाए, सीपीएम को हटा पाए, लेकिन बीजेपी के करने में माहिर है कि इस जी करने में सक्सेसफुल होंगे। वसुधा जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बीजेपी का समर्थन था जब ममता जी जब लड़ाई कर रही थी बंगाल के सड़कों पर सीपीएम के वायलेंस के खिलाफ, सीपीएम के दुराचार के खिलाफ, तो भाजपा उनके साथ थी। और उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने भी ममता दीदी को बहुत समर्थन दिया था उस उनके पूरे इस संघर्ष में। लेकिन उसके बाद जब सरकार आने के बाद जिस हिसाब से कहिए कि जो परिवर्तन हुआ उनके उनके पूरे बिहेवियर में और उनके पूरे चरित्र में, कि जो भी बीजेपी के ऑफिसर्स को तोड़ा जाना और उनके कार्यकर्ताओं को मारना, उनके बिजनेसेस को तोड़ फोड़ के उनको दुकानों को खत्म कर देना, उनको बंगाल छोड़ के बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता पूरे फैमिली के साथ, और जिस हिसाब से वो एट्रोसिटीज हुई, तो वो हम सब ने देखा है। और हो सकता है ये उसी का एक और नमूना हो जो ममता दी ने दिखाने की कोशिश की हो कि सी कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन बंगाल। तो वो एक दिखाने का तरीका हो सकता है, जिसके मुझे जो जैसा लगा कि जो सामने वाला व्यक्ति वो उस चीज को ना जज कर पाया हो और फ्लो के साथ गया। तो मुझे लगता है यही इस पूरे घटना के ऊपर मेरा यही कहना है। अनिमित्रा दा, आप तो बंगाल से देख रहे हैं ऐसे हालत को, आपको क्या लगता है बीजेपी रेजिस्ट कर पाएंगी? अगर गवर्नर बदला के जाए तो रेजिस्ट कर पाएंगे? Well, Basudha ji, there is a point. When Modi ji came to power in 2014, there are lots of expectations and aspirations for the persons who are Hindu nationalists, who are of the Hindu fold. उस समय हम लोग भी बीजेपी पे थे, मैं भी था, और जिला कमेटी में भी था, एक बार स्टेट कमेटी में था, वगैरह वगैरह whatever it is. But unfortunately, the Bharatiya Janata Party in Bengal has failed to put up its mark. If we just relate to the incidents of 2005 and 6, in 2006, that election, the left-front government swept the entire vote. The opposition managed to get only 35 seats, I think. So Buddha Bhattacharya said with extreme pride, "Amra 235 ওরা 35 কে আমাদের আটকাবে? We are 235, they are 30, and who can prevent us?" But at the time, in that mass movement, it must be taken into consideration that the Nandigram mass movement and the single mass movement of the peasants were started by the lefts who were not on the CPM side. Later on, it was hijacked by the Trinamool Congress, but definitely Trinamool Congress had the power to encounter the revolver of CPIM, and they emerged victorious in 2011 at the end of the day. From 2016 to 2014, especially 16 to 2023, there have been lots of occasions in Bengal where Trinamool Congress could have been challenged in a better manner. Be it the Daribet incident where two young boys were murdered with Rajesh and Taposh in 2016, 15 or 16, to the extreme agitations among the TET teachers and also other teachers also, the extreme disaffection regarding the DAs and other things among the governmental employees, and several other issues, especially the border situation where the Hindu-Muslim tension is rising steadily. This could have been, I'm not to forget of the Boshir Hut, certainly. It was almost a civil war. This could have been exploited by the Bharatiya Janata Party. I'm not
using the word exploit in a very wrong sense, but I'm saying that they could have taken the benefits. It could have been benefited by the Bharatiya Janata Party in a better manner had the party acted in a very defiant role, had the party been in the streets, had the party taken care of its own cadres. Since we do know in 2021's election what did happen at the time, the cadres were on the run, the leadership didn't take care, there are lots of problems, and those problems even surfaced in the social media. I must say, at the end of the day, that if the opposition, well, I must say that the Trinamool government at present is in a fix. One after another, its financial scandals are coming out. And this is the most appropriate time when the very strong opposition force can extend its greatest pressure on the entire governmental administrative scenario. Take, for example, Bharatiya Janata Party has 77 MLAs in the Bengal Assembly and 18 MPs in the parliament. But unfortunately, such a huge band of legal representatives have failed to earn the attention of the central government. Now, many people do say, why doesn't Modi ji look after Bengal? We do have the answer. We must give the answer that people of Bengal have given votes to all these people. 77 plus 8, 95 legal representatives of the Bharatiya Janata Party. What the hell are they doing to earn the government's attention from Delhi? India has lots of states. Each and every state had its own problems and struggles, and the central government has to look after each in an equal manner. Now, if your state is in a greater problem, it's your responsibility to earn the attention of the central government, the central cabinet. But the opposition, since the lefts are no longer in the opposition at this point of time, I do not know what is going to be after the Panchayat election, the imminent Panchayat election. But at this point, this is Samay, BJP happens to be the only running force in the Bengal Assembly. It can go against the government. There is the central government, its own party. And that party, which is in the central government, Delhi, is with a huge, at the zenith of its success. The safalya ke sarbochcha jo shikhar hai na, uspe baithe hai. Everywhere it is. But even after that, Bharatiya Janata Party state unit has failed categorically and considerably to exercise any pressure on the central government at Delhi to work against the state government. And what's more striking, only a few days back, I think digital award was given the Duare Sarkar policy, if I'm not wrong, isn't it? So if the central government comes and recognizes the execution, the day-to-day affairs of the state government, if the central government gives you the award of your excellence in running the administration, that means it's realized that the central government has no problem with the state government. And the central government has given its due share of the GST to the state. Only a few days back, we were just hearing that the Bengal government and also its economy is on the verge of collapse. On the last Saturday, we, the Bengal Volunteers' YouTube channel, there was a live session with a few IT experts from Calcutta. They have said that no, the economy is not so wrong as it is being painted. Now, my question is, what will people ask? Is there any wrong information from the opposition? But what do we know, as we, the people who are walking on the ground without any political tag, do know that the administration in Bengal is getting more and more communal, is getting more and more anti-Hindu. If you go to the remote corners of the South 24 Parganas district or North Parganas and any other parts of Bengal, you will find that even the healthcare system, even the communication system like the roads, the lights in the streets, these are also being built, are also being instructed on a communal basis. Only a few days back, I had gone to a place called Bohoru in the South 24 Parganas, where it's known to be very, very communal district. What I said at 6 in the evening, there are Hindu areas are completely in darkness, with the broken roads, almost no lights in the streets,
Whereas the other areas and just adjoining to it are having a very good day and very, very good lights, roads, and everything. So I asked her, what's the problem? He said, Dada, this is on a communal basis. And what's the position? What's the percentage of Hindus here? He said the Hindus are 68%. Well, then just recognize if the 68% Hindu area witnesses such a communal division, communal uh, instigations, what shall happen if the Hindus become the minority? This is the problem of Bengal now. And the steady influx of the illegal Bangladeshis from across the border, across the state, not only in Bengal, but in Bihar, Jharkhand, and Orissa, and also the diabolical procedures of the Christian missionaries, which is being more and more prominent in Bengal, all these are ruining the state. Unfortunately, there are lots of issues. You cannot measure the issues. There are issues in almost every local, in every neighborhood. But the Hindu nationalist political force in Bengal has not been able to take or to exploit a single one. Take, for example, after the 2021 episode, if the entire Hindu nationalist force had come to the streets in Calcutta without a single party flag and everything, asking for justice and decrying the government, making a national press conference and bringing to the fore all the grievous human rights violations, it would have made a thunder in the entire environment. It would have rocked the entire state of Bengal. But unfortunately, the opposition has failed completely to do its part. And make sure this steady failure of the opposition is strengthening the Trinamool government day by day. So what are they doing with the governor? I don't know whether the governor shall be changed or there shall be a new one. I do not know. But even if there is a new one, Trinamool government is not going to repeat the mistakes it made with Dhankarji. There shall be no such mistakes. Trinamool government is in a new way, is a new fashion. It's becoming a corporate party. It is trying to tame the governor from the very beginning. It's a taming, domesticization. They are trying to say the governor, look, we are at the helm of power, we are calling the shots, and you can't live happily or safely if you go against us. This is a single message. And make sure, as far as my experiences are concerned, many may say that Mamata Banerjee is known for impulsiveness and everything, but nothing. There's no impulsiveness. Each and every method, each and every procedure adopted is very, very calculated. When she is going and Meghalaya and saying coo coo is also calculated. What she is doing with the government is very calculated. Unfortunately, till the opposition gets active in the state, and unless the central government becomes hyperactive, this scenario of violence, of confrontation shall never end in Bengal. अमित जी, अनिमित्रा दा जो बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई टीमिंग हो गया है क्या सेंट्रल और स्टेट के बीच? No, I have not said that there is. Just a minute. I have not said there is a central. I have not said that there is a settlement. I have said the central government and the opposition in Bengal is not up to the mark. They are not playing the expected roles. I'm saying. I'm not saying that there has been a settlement. Okay. नहीं, आप नहीं बोले. मैं पूछ रही हूँ अमित जी से कि आप दोनों के बीच कोई डील हो गया है क्या? कांग्रेस और लेफ्ट तो बोल रहे हैं आप दोनों के बीच डील हो गया है. नहीं वस्तु जी, देखिए कांग्रेस क्या बोल रहा है उसका स्पष्टीकरण तो कांग्रेस ही दे पाएगी, बट मुझे जहां तक लगता है भाजपा का बंगाल का नेतृत्व, खासकर अभी जो लीडरशिप वहां पे अभी काम कर रही है, वो सक्षम है, वो सशक्त है और मेरे ख्याल से सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है. जो भी हमारे अभी सुकांतदा स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुवेंदुदा हैं, तो ये सभी लोग बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और वो जानते हैं
कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है. इट्स नॉट दैट कि दे आर अननोन ऑफ द फैक्ट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑन एट द ग्राउंड लेवल. सो ये जानते हुए भी, और जिस जिस हिसाब से हमने पिछले विधानसभा इलेक्शंस में देखा है जो एट्रोसिटीज खासकर हिंदू कम्युनिटी के साथ और स्पेसिफिकली बीजेपी के कैडर के साथ जिस तरीके से हुआ था, और उनको घरों को तोड़ दिया गया, उनके बिजनेसेस को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, जो छोटे मोटे ठेले या कोई दुकान लगाते थे किसी जगह पे उनको तोड़ दिया गया, उनकी घरों में घुस कर मारा गया, उनकी माताओं को, बहनों को हमारी जिस तरीके से एक बहुत ही बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया. तो इन सभी चीजों को देखते हुए और इन सभी परिस्थितियों को समझते हुए भाजपा का जो बंगाल का नेतृत्व है वो काफी सक्षम है और इस मामले में. और जो भी हमारे अभी सुनील बंसल जी प्रभारी हैं पूरे राज्य को, वो अपने निजी एक्सपीरियंस में पिछले जो भी जिन जिन घटना जो 24 परगना की बात हो रही है, साउथ 24 परगना में कैनिंग जैसे इलाके में, मगराहाटा जैसे इलाके में, बराईपुर जैसे इलाके में मैं खुद गया हूँ विधानसभा के इलेक्शंस के टाइम पे. मैंने खुद वो सारी चीजें ग्राउंड पे देखा है किस हिसाब से वहां पे. और जो भी अनिमित्रा दा बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है. वहां पे आप जो हिंदू कम्युनिटी है उसको किस तरीके से मार्जिनलाइज किया जाता है एक समाज में, किस तरीके से उसको पीछे धकेला जाता है, और जो भी वहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको अपीजमेंट की जो वहाँ पे एक वो बहुत स्पष्ट दिखता है. वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना बिजली की सुविधा है, ना आपने देखा होगा रामपुर हाट की वो घटना जिसमें लोग अपने ही घर में बम बनाते बनाते मर गए और फिर एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए जला दिए गए. तो ये सारी चीजें वहां पे होती है. और उससे बड़ा जो कैनिंग का जो एरिया मैं बोल रहा हूँ और मगराहाटा, ये सारे एरिया एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड, एक बहुत ही उनके जो शौकत मुल्ला हो गया और समील लश्कर हो गया, ये सारे वहां पे लोकल गुंडे हैं टीएमसी के, आप अगर देखा जाए तो हिसाब से, जो कि उन एरियाज को कंट्रोल और डोमिनेट करते हैं. तो उन जैसे जगहों पर हमने जाकर काम किया है और हमें वास्तु स्थिति पता है और हमारे लीडर्स को भी पता है. और इसी वास्तु स्थिति को रखते हुए देखिए आप एग्रेशन में आके आप स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, इन सब मामलों में थोड़ा सा आपको सब कुछ देखते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं. और किसी भी डिसीजंस को जब आप लेते हैं तो उसको आपको ओन करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे. यू कांट इग्नोर इट. तो हमारे जो लीडरशिप है बंगाल की अभी, इसने अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन है वो लेगी. और जो भी आगे आने वाले अभी इलेक्शंस होंगे, 24 में होंगे, फिर 26 में होंगे, या उससे पहले की भी अगर कुछ घटनाक्रम में चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस लिया जाएगा. बट वो चीज एक लीडरशिप लेवल पर होगा और एक पार्टी लेवल पे डिस्कशन के साथ होगा, ना कि एंग्जाइटी या किसी ऐसे चीज को देखते हुए होगा. आज अपने आए कि कंक्लूजन में क्या बोलना चाहेंगे अनिमित्र दा? ये जो गवर्नर का जो बात चल रहा है, श्रीकांत जी जो बोल गए हैं, आपको क्या लगता है यही होने वाला है सेंट्रल से एक्शन में? गवर्नर चेंज होने वाला है? With due respect to Srikant ji, I don't think it's so easy to change the governor within a week for so many political reasons or private reasons. I don't think so easy. But it can be done. That the governor can be cautioned. The governor must be remembered, must be asked to play the constitutional roles, to be in the frameworks of constitution, and that can be done. I don't think it can be changed so easily. And well, I do not know what's going to decision. It's my opinion. And as far as Bengal is concerned, unless Bengal is known for street fights and everything in politics, I think Amit Tiwari is also very much concerned of Bengal. He knows all these things, and he can't speak all these things for his political compulsions and everything. It might be, or party. He is related to the party, and I am not related to any party. So there must be differences in analysis. But as far as the state is concerned, there are more battles to be fought.
The coming days are going to witness more and more battles. It must be stated very clearly. And who are listening to this must be kept in mind, they must keep in mind that it's quite futile, it's quite wrong to depend on a single political party. You must also make your preparations at your own ground. It's also necessary. Even the political party, take for example, when we say the Bharatiya Janata Party has not done something for the Hindus, if the party asks us, we the people, what if are you coming with us? If we consider that since we have given the vote to a political party, the party can do everything and we shall look at it from the safe distance within our houses and are making the claps and everything, it's not a suicide. If you are dealing with a very, very powerful group that can go to any level to attain its objective, then you must also make very good preparations on your front, since your political party depends on your preparations as well. And this lesson has been learned from 2021. And if 2021 is not going to, if we don't want to repeat 2021, we must make the preparations on it. That's the lesson Bengal can get at this point. That's all. अमित जी क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, absolutely. Conclusion में वही वसुधा जी, absolutely. Amimitra da, whatever his analysis is, and it's I completely understand. He has worked at the ground level, and he speaks out of that. He has seen the pain, and he has experienced that. So I can understand all of that. But yes, at the end of the day, we have to fight this battle politically, and we have to continue our fight, whether the governor will be removed or not, or whether he'll be advised on some of his behaviors. That's the matter party has to take, and I am not authorized to say anything about that. But yes, we'll going forward, we'll see how things are happening in Bengal. But from now and from today, whatever I have said, I can say that the party, the BJP West Bengal particularly, is in very capable hands to deal with the entire scenario of Bengal, which is currently suffering, and we will bring the change. हमारे शो तो खत्म हो गया है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं अनिमित्रा दा से करना चाहती हूँ, उसके जवाब अमित जी से भी लेना चाहती हूँ। अनिमित्रा दा बांग्लादेश के हिंदू के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। कल ही अपने जो बांग्लादेश में जो सरस्वती पूजा का पैंडल का फैंडलाइजेशन हुआ, उस पर बोले, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या रखते हैं आपको बांग्लादेश के हिंदूज का? Well, Bangladesh is going to be the largest homogeneous state in the world within a very few years. It must be be kept in mind that the whole of Bangladesh is not in the hand of a single political party. Take for example where the Rohingyas station at this time is Chittagong. The Jamaat-e-Islami is running its language university where we different Indian languages, be it Bengali, Indian type of Bengali, not that type of Bengali, Indian Bengali, Hindi, Gujarati, and Marathis are being imported. The Rohingyas are being trained in all these languages and being sent stealthily to India to disturb the demographic scenario. In this section, unless, well, it must also be stated that in Bangladesh, Bangladesh has all states that there is 7.5% population of Hindus in that country. But in reality, it's not less than 11%. But why 7.5%? Unless this number is projected, the Bangladesh is not going to have the international assistances from the Islamist international organizations. As far as Bangladesh is concerned, its situation is very pale. The Hindus there are having an existential crisis. Only a few days back, the Hindu Mahajot came out with a dreadful account of the Hindu persecution in the whole of year of 2022, from January to December 31, where we have found that almost 85,000 families are
terrorized. Many people have left. No less than 60 Hindu women have been raped, among them 25 gang raped, and 14 have been raped after the have been murdered after the rapes. From 2013 to 2023, 2014 2023, in the 9 years, there have been 3,769 reported incidents of assaults on the minority, especially on the Hindus. And where are these reports coming from? These reports are coming from not only ground investigations, these reports are being collected from the reports from the press and media of Bangladesh. According to Dr. Abul Barakat, the well-known professor of Rajshahi University of Economics, between 1964 and 2013, more than 1 crore 12-30 lakh Hindus have left East Pakistan or Bangladesh by now. Where are those? There's a huge missing population. And all this make the Hindus in Bangladesh the most persecuted minority in the global environment. But unfortunately, despite several requests, several demonstrations, several missions and everything, the United Nations has not been able to act in an appreciated manner, in the expected manner, to deal with this one of the worst अमित जी human मैं atrocities in the country. अनिमित्रा दा अमित जी कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? Of course, certainly. नहीं, बिल्कुल अनिमित्रा दा का मैं समझ सकता हूँ। हमने भी कई प्रोग्राम किए थे जो बंगाल में इस साल तो नहीं, पिछले साल जो सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में जिस तरीके से पंडाल को वेंडलाइज किया गया, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को घरों को जला दिया गया, तो वो सब हमने देखा। पिछले 2022 में जो डेटा अनिमित्रा दे रहे हैं वो सब हमने देखा था, और कई प्रोग्राम्स हमने भी वहाँ पे किए थे, वहाँ के लोगों के साथ मिलके किए थे, ऑब्वियसली वर्चुअली, बिकॉज हम वहाँ पे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, तो मिलके किया था। और आई नो द सिचुएशन, एंड फॉर दैट रीजन, आई मीन दैट इज द वेरी रीजन that the government, the BJP, the central government, has came up with the CA and NRC bill, because the we have seen the neighbors, how they treat the minority community over there, and that is the very reason that the NRC and CA is why so important. And when you see incidents like this happening in Pakistan, be it Baluch, Gilgit, Balochistan, and all those areas, be it Bangladesh, and the regions which are very close to the Bengal, and how these people come through Indian territories. So that is the very reason. So that seeing all that, we keeping in mind this entire bill has came, but unfortunately the people made a huge chaos of it, and without understanding. And there has been a serious allegations that that they were funded by the wrong parties, they were funded by the foreign money, and all those stuff is there. So all that is going on, and I guess India government is also putting pressures on the Bangladesh government time and again. हमारे विदेश मंत्रालय से उनको सूचना जाती रहती है, उनको निर्देश जाता रहता है, and the government is very prompt enough to comment on whatever the events happen against the Hindu community in Bangladesh. So वो सब the government is very vigilant, and और विदेश मंत्रालय से ये सारे कमेंट्स जाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो solution है वो with the time, with the talk, with the taking the government in Bengal in consideration, and making them tend towards bend towards the working for the people, and stuff like that. So एक political level पे, एक foreign policy level पर, और एक एक प्रेशर करके गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, and I think we'll change. अनिमित्रा दा, अमित जी, आप दोनों हमारे चैनल पे आए,
इतने वैल्यूएबल बात की। और आप दोनों को फिर से मैं इनवाइट करूंगी, श्रीकांत जी को भी मेरे तरफ से शुक्रिया, वो भी आए। आप दोनों का बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद, आप तीनों का धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शक देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। नमस्कार।